Hello friends, today we will do chapter number 5, Judiciary. This whole chapter is about the role of judiciary, independent judiciary that we will learn in this video. First topic is, what is the role of judiciary? Dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two states governments and central and state गवर्नमेंट. जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि हमें डिस्प्यूट सॉल्व करने में हेल्प करता है. किस किस में डिस्प्यूट सॉल्व करने में? सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, दो स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में. सेकेंड इज जुडिशियल रिव्यू. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down the particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. अब ये judicial review क्या है? ये judicial review जुडिशरी को पावर देता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉज पास किए हैं वो उन्हें कैंसिल कर सकते हैं अगर उसे लगता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है. थर्ड इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की बजाय सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, on hearing Hakim Sheikh's case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provide every citizen the fundamental right to life, also include the right to health. Our next topic is, what is an independent judiciary? Independent judiciary क्या है? One aspect of this independence is the separation of powers. Means there are other branches of government. The legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. गवर्नमेंट की अदर ब्रांचेस हैं जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो जुडिशरी के काम में इंटरफियर नहीं कर सकते. द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court appointed with very little interference from these other branches of the government. Once appointed to this office, it is very difficult to remove a judge from its position. एक बार एक जज को अपॉइंट कर दिया जाता है इस ऑफिस में, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है एक जज को उसकी पोजीशन से रिमूव करना, यानी जज के ऊपर केस करना एक बहुत मुश्किल बात है. It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in assuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है जो कि उसे अलाउ करती है, जो कि कोर्ट्स को भी अलाउ करती है इंश्योर करने में कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज ना करे. इट आल्सो प्लेस अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. Next topic is, what is the structure of courts in India? District Court, High Court and Supreme Court.
लो लेवल पे सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद है हाई कोर्ट और सेंट्रल लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट। तो आइए पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो कोर्ट्स जिससे ज़्यादातर लोग इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादातर जाते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। These are usually at the district or tehsil level or in towns and they hear many kinds of cases. ये यूजुअली डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होते हैं और टाउन्स में होते हैं और ये अलग अलग तरह के केसेस को सुनते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस ये सुन सकते हैं। Each state is divided into districts that is presided over by a district judge. हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा रूल किया जाता है। हाई कोर्ट, ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जो कि उस स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट, एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली and is presided over by the Chief Justice of India. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ का जज है। The decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जितने भी इंडिया में हैं उन सब पर अप्लाई होते हैं। What is an appellate system? This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. सपोज करो एक पर्सन लोअर कोर्ट में जाता है और वहाँ की जो जजमेंट है उस पर्सन को फेयर नहीं लगती, तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। इसे हम एपलेट सिस्टम कहते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। Criminal law deals with conducts or acts that the law defines as offenses. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, and murder. It usually begins with the lodging of an first information report (FIR) with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. Civil law. It deals with any harm or injury to rights of individuals, for example, disputes relating to sale of land, rent matter, divorce cases, etc. A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case. Next topic is, does everyone have access to courts? In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. In reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. असलियत में कोर्ट्स में जाना बहुत मुश्किल है पुअर पीपल के लिए। For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. जो पर्सन पुअर है, जो कि पढ़ नहीं सकते और जिनकी फैमिली डेली वेजेस पर अपने घर का खर्चा चलाते हैं, उनके लिए कोर्ट जाने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है। Our last and important topic is Public Interest Litigation, PIL. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those persons whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram
A trace to the Supreme Court or the High Court could be treated as PIL. Earlier, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhumane work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. Thank you, friends.